Hello everyone. Today we will discuss a very interesting topic of sociology, and the name of the topic is emergence of sociology. This is the first topic of our sociology. Emergence of sociology. It's a very important topic, and why? Because UPSC will ask this topic each and every alternate year. Mainly this topic is asked in 10 marker question. Okay, so we need to focus on not more than 200 words. So let us start. Emergence of sociology. The first thing is introduction. So before going to start any topic or before going to write any answer in examination, it is very important to know the introduction. So simply people are asking to me, sir, what should be the introduction? In introduction you need to define that topic itself. So emergence of sociology, intro. So here we will define what do you mean by sociology, or the definition of sociology. It's scientific study of society and human behavior is known as sociology. It's a scientific study of society. Means it's not a general study of society and human behavior. It's a scientific study of society and human behavior is known as sociology. Why it is scientific study? ये scientific study क्यों होता है? Because we need to focus on those aspects of society which can be observed, which can be experimentally proved, on which we can apply the basis, the principles of science. So it is scientific study of society and human behavior is known as sociology. Now our topic is emergence of sociology. Emergence of sociology. So sociology emergence takes place in mid 18th century. Mainly in Europe. And the emergence of sociology takes place by three major processes. And we need to discuss all the three major processes in detail. Now we need to make this diagram. ये एक diagram बनाओ, and definitely you will score very good marks if you made this diagram. This is emergence of sociology. The first is Enlightenment phase. The second is French Revolution. And the third is Industrial Revolution. Enlightenment means age of reason. Ideals of French Revolution: liberty, equality, and fraternity. And this is systematic application of science and technology. We need to make this diagram. If there will be a question, emergence of sociology, then emergence of sociology takes place in three major processes. The first one is Enlightenment phase, or the age of reason. The second is French Revolution. The ideas were liberty, equality, and fraternity. The ideals were. And the Industrial Revolution phase means systematic application of science and technology. Now we are going to discuss all these three concepts, three topics in detail, which led to emergence of sociology. The first one is Enlightenment phase. So Enlightenment phase, this is also known as the age of reason. तो इसमें लिखेंगे, it put human being at the center of the universe and rational thought as the central feature of human beings. Rational thoughts. पहले क्या होता था? Initially, the European society was guided mainly by church. Same in India, we are mainly guided by mandirs. In Islam, mainly guided by masjid. So European society is mainly guided by church. So what was happening in the society, what was happening around us, वो अच्छा हो या बुरा हो, उसको एक ही चीज बोलते थे कि भगवान ने किया है. ओके, रैशनल थॉट उसमें था ही नहीं. बट व्हाट हैपेंड इन एनलाइटमेंट फेज मींस द एज ऑफ रीजन. रैशनल थॉट इमर्जेस. अर्लियर church occupied the dominant position. Now the rational thought, people's intellectual abilities were got central position in the society. इसका एक लाइव एग्जांपल के साथ समझते हैं what is enlightenment phase और the age of reason. इसमें हुआ क्या? फॉर एग्जांपल एक स्टोरी बताता हूँ. एक बार एक पार्टी हुई गांव में. तो गांव में एक रसमलाई बना, बट
वंस दोज पीपल हु ईट दैट रसमलाई, उनको कुछ स्टमक प्रॉब्लम होने लगा, दे फॉल इल। तो ऐसे पूरे गांव ने उस रसमलाई को खाया एंड पूरे गांव को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ, स्टमक प्रॉब्लम। सो अगले दिन पूछा गया कि व्हाट वाज द बेसिक रीजन बिहाइंड दैट। एक ग्रैंड माँ थी, उनसे पूछा गया कि इज देयर एनी रीजन बिहाइंड दैट, कि रसमलाई खाने के बाद सारे के सारे गांव का पेट खराब हुआ, तबीयत खराब सी हो गई। सो व्हाट वाज द बेसिक रीजन बिहाइंड दैट। तो उन्होंने बोला कि देयर इज ए घोस्ट हु केम एंड टच दैट रसमलाई एंड दैट इज द रीजन वाई ऑल द पीपल्स ऑफ विलेजेस फॉल इल। तो उन्होंने क्या बोल दिया कि घोस्ट आया और टच करके चला गया, इसकी वजह से खराब हो गया। बट द प्रॉब्लम इज दैट इंटायर विलेज एक्सेप्टेड दैट कंसेप्ट कि हाँ घोस्ट आया होगा, उसने टच किया और सबकी तबीयत खराब हो गई। सो व्हाट वाज दैट इरेशनल इलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी फिनोमिना। अरे दूध खराब हो गया होगा, इसकी वजह से प्रॉब्लम हुई होगी। सो व्हाट वाज हैपनिंग इन यूरोप एट दैट टाइम, कुछ भी हुआ, यूपीएससी अब क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्या हुआ, भगवान चाहते थे कि हमारा सिलेक्शन ना हो अभी। नो, द रैशनल थॉट सेज दैट, द एज ऑफ रीजन सेड दैट, कि आपने पढ़ा होगा लेकिन सही तरीके से नहीं पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई योर यूपीएससी एग्जाम। Okay, so enlightenment phase, rational thoughts were put at the central position. This is also known as the age of reason. So this is enlightenment phase. It put human being at the center of the universe and rational thought at its central feature. So this one is the enlightenment phase. We need to discuss on enlightenment phase. Now the second, which is very important, is French Revolution phase. The second is French Revolution phase. This is also very important phase. अब फ्रेंच सोसाइटी क्या था? इनिशियली फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. द फर्स्ट इज नोबेलिटी, so initially what was happening in French society was divided into 3 parts. The first one is nobility, इसको फ्यूडल से क्लर्जी बोल दो. Nobility, clergy and commoners. So what was happening, nobility class and the clergy class को priest class भी बोलते हैं, इसको landlords भी बोल सकते हैं, and common means peasants, etc. means rest of the society, commoners. So what was happening in the French Revolution, in the French society? Initially, the society was divided into 3 categories. The first one is nobility, then clergy, and then commoners. These are paying, these 2 strata of the society paying no taxes, and enjoying all the benefits of the society. But this strata of the society means commoners, they are paying huge amount of taxes and still their condition was not good. They are paying heavy taxes and still their condition was not good, like rest of the society, peasant, artisans. So these are the commoner. So what was happening in the society with the passage of time? Revolution occurs. Revolution takes place. Revolution takes place. क्यों? क्योंकि some are enjoying a lot and some are not enjoying in the society. अब revolution हुआ, French Revolution 1789. So what were the ideals of the French Revolution? Were liberty, equality and fraternity. Liberty, equality and fraternity. Equality is the major part. क्यों? क्योंकि we all are equal. Fraternity means brotherhood. Liberty means liberty from the commoners and clergy class. Okay? So these were the ideals of French Revolution. अब इसको एक लाइव एग्जांपल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप डेट पे गए किसी के साथ और सुबह से शाम रहे, घूमे फिरे, खाए, और रात को 8 बजे आपकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि मेरे बॉयफ्रेंड का या मेरे फादर का फ़ोन आ गया, मैं जा रही हूँ. व्हाट यू विल डू एट दैट टाइम? उस समय आप क्या करोगे? एक चीज़ करोगे, वो है रिवॉल्ट. सेम थिंग हैपेंड इन फ्रेंच सोसाइटी. रिवॉल्ट हो गया, और जब रिवॉल्ट हुआ, देयर इज क्योस इन द सोसाइटी. एनलाइटमेंट फेज, जो अर्लियर स्ट्रेटा था वो चेंज हो गया. क्यों चेंज हुआ? बिकॉज ऑफ एनलाइटमेंट मीन्स एज ऑफ रीजन. लोग क्वेश्चन करने लगे, तो जो सोसाइटी का स्ट्रेटा था वो चेंज हो गया.
इसमें रिवोल्यूशन हुआ सोसाइटी में, और सोसाइटी में रिवोल्यूशन हुआ, क्योस क्रिएट जनरेट हुआ, और जो अर्लियर जो स्टेटा था सोसाइटी का वो चेंज हुआ। दोनों में एक चीज कॉमन हुआ कि अर्लियर सोसाइटी चेंजेस एंड न्यू टाइप ऑफ सोसाइटी इमर्जेस, एंड दैट लेड टू द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। क्यों? क्योंकि जब सोसाइटी चेंज हुआ, उसका फॉर्म चेंज हुआ, तो उस स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए वी नीड टू डेवलप सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। उस स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए सोशियोलॉजी का इमर्जेंस हुआ। ओके, एनलाइटमेंट फेज में भी यूरोपियन सोसाइटी में चेंजेस आया, फ्रेंच रिवोल्यूशन फेज में भी यूरोपियन सोसाइटी में चेंजेस आए, दोनों में चेंजेस आए, एंड दैट लेड टू द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। द थर्ड फेज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फेज। अब इसमें क्या हुआ? वी नीड टू फोकस ऑन साइंटिफिक application of science and technology. The second is organizing labor and market. So what was happening in industrial revolution generally started in Great Britain. इसमें ये हुआ साइंटिफिक एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजिंग लेबर एंड मार्केट। तो इनिशियली man act as a means of production, but what happened in industrial revolution phase? Scientific application of science and technology means of production changes from man to machine, and the second is organizing labor and market. जब ये दो चीजें हुई, so there are something which was happening in the society that led to the changing, that led to a new type of strata in the society. अब देखिए क्या हुआ, what was happening in industrial revolution phase. The first is emergence of middle class. The first one is emergence of middle class. Now what was second thing which was happening during industrial revolution phase is urbanization, and the third is, which is very important, is capitalism. सो इमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास, जब मिडिल क्लास का इमर्जेंस हुआ, इनिशियली सोसाइटी में क्या होता था? क्लर्जी, नोबिलिटी एंड द कॉमनर्स। लेकिन विद द अराइवल ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन देयर इज इमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास इन द सोसाइटी, एंड दे डिमांड वेरियस टाइप ऑफ राइट्स। द सेकंड इज अर्बनाइजेशन, मीन्स अर्बन कल्चर, रूरल कल्चर चेंज हो गया एंड अर्बनाइजेशन टेक्स प्लेस, एंड द थर्ड वन इज कैपिटलिज्म, मीन्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। दीज थ्री थिंग्स हैपन after industrial revolution, and that create chaos in the society, means societal order changes. और जब societal order changes हुआ, then we need to study that society, and that led to the emergence of sociology as a discipline. So last, in conclusion, what should be the conclusion? That sociology is also called as the child of age of revolution, child of एज ऑफ रिवोल्यूशन। क्यों इसको सोशियोलॉजी को चाइल्ड ऑफ एज ऑफ रिवोल्यूशन क्यों बोलते हैं? बिकॉज सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन इमर्जेस ओनली बिकॉज ऑफ थ्री फिनोमिना। द फर्स्ट इज एनलाइटमेंट, द सेकंड इज फ्रेंच रिवोल्यूशन, एंड द थर्ड इज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। और तीनों क्या है? एक रिवोल्यूशनरी एक्ट है, और इसके थ्रू सोसाइटी का स्ट्रक्चर चेंज हुआ। जब सोसाइटी का स्ट्रक्चर चेंज हुआ, देन वी नीड टू डेवलप a new discipline that should focus only on the society and changes which occur in the society, and these three phenomena led to the development of sociology. So this should be your topic. Emergence of sociology takes place in three major processes: Enlightenment, French Revolution and Industrial Revolution. So this is all about today's lecture. In the next video we will discuss the scope of sociology. Okay, this is all about today's lecture, and we will meet tomorrow. Thank you so much.